जय जगन्नाथ सांगमने वेलकम टू आवर चैनल। आजी पढ़िबा इंटरनल्स ऑफ एरे लिस्ट इन जावा। वेरी इंपोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। फर्स्ट जानिबा व्हाट इज एरे लिस्ट इन जावा। एरे लिस्ट हेउछि गोटे क्लास जोटा की डुप्लिकेट एलिमेंट्स अलाउ करे आउ मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर आउ एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट्स नल वैल्यू। Internally, ArrayList uses a dynamic array to store elements. Dynamic array mane we can increase or decrease the size of the array. A dynamic array is an array that automatically resizes itself when it becomes full. In Java, ArrayList is a dynamic array implementation. Ebe dekhiba internal of ArrayList in Java. Jodi ame create kariba ArrayList, for example, ArrayList list is equal to new ArrayList, then एटा गोटे empty ArrayList create करिबो। Starting index हेउछि 0 काहेकिना एटा internally dynamic array यूज करे। जेतेबेले आमे first element add करू सेतेबेले तारो default capacity हेउछि 10। For example, ArrayList list is equal to new ArrayList. List.add a. Internally capacity हेउछि 10 आउ size हेउछि 1। आउ गुटे एग्जांपल देउछि जदि गुटे एम्प्टी एरे लिस्ट रे तीनिटा एलिमेंट ऐड करिबा माने ArrayList list is equal to new ArrayList. List.add 10, list.add 20, list.add 30. Then internally size हेउछि 3 आउ capacity हेउछि 10. जदि तीनिटा ऐड कला परे जदि आउ गुटे ऐड करिबा then कोन हेबो? Then internally से size केते फाइंड करिबो। Before रे size थेला then से size plus plus करिबो means ए example रे 4 आसिबो माने 4th position रे add मारिबो। आमे जानिछु कि array list starting from 0 index सेथि पाई 3rd index रे store करिबो। मनरे गोटे question आसुथिबो जदि full हेइ गला then कोन हेबो? जदि आमे 10 elements add कला परे for example 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 add कलु then again आमे 110 को add करिबा को try करिबा then array list ए formula रे add करिबो। Capacity is equal to old capacity plus old capacity by 2 माने old capacity हेउछि 10 plus old capacity by 2 माने 5 new capacity हेउछि 15। Similarly, जदि 15 भी full हे गला then same formula पड़िबो next capacity हेबो 22। Complete array list flow देखिबाकु गले first create array list then it create empty array. If we add element then it check capacity. If space available then add. If full then grow array. Then copy old data to new array then add new element then increase size. Thank you.